important than the English quiz. So very quickly, a very warm welcome. It's a nice Saturday evening. It's rather balmy, at least where I am, and I hope it's the best of weather where you are, and hope all of you are comfortable. There have been some very not so nice things happening around the world. And while there's not much we can do about that, I think just living in our world where we are just more curious, we want more facts, we want to do good. Sometimes even just that intention with which we live is, I think, the best we can do. So without anything more, I'm just going to get straight to the point. This is India Fact Quiz's Game of Facts, which we run every week. It's powered by India Spend, which is a data journalism initiative. And very simply, we put together a bunch of questions that have got nothing to do with general knowledge as much as it has to do with your own biases and the perceptions that all of us carry around with us wherever we go. If you can counter that and if you can face that, then you are really good to go and walk away with this week's fantastic book. Now, Muskan has selected this. It's called God and Ends. I have not read the book, but when I read the reviews of the book, I just knew exactly what I was missing. This is a JCB Prize short list of 2021. It's written by Lindsay Pereira. Now, he's a journalist, and the story is set in Bombay, a city that is very close to my heart. And it's a very, Bombay is sort of Mumbai, as you'd call it now, is a very controversial subject. So it tends to sort of either bring out the best or the worst, and people say it's absolutely terrible to live there, or some people are still sort of very fascinated about it. But his world is a world in a small suburb of Bombay, and it's very grim, it's very boxed in, and but it is very interesting because he brings to light in a very candid, in a very sort of honest way, as honest as a writer can be, the world that he sees in Bombay, which is really not very glamorous, not very fun, not very exciting. We think we're very independent, but we're not. In fact, he says when his mother read the book, she wept. She cried because she said, no, you can't do this. Because all of us sort of harbor and hold nostalgia and memories very close to us. So I'm not going to give anything more about the book. I'm going to read it myself. And I hope the three of you that win this book also enjoy reading this. So just very quickly, for those of you who are new to this format, log into www.kahoot.it, kahoot.it. Don't download anything. It's not very complicated. And you put in the game pin. Now, Rupesh is helping us out at the back end today. So thank you, Rupesh. And just ask him for the pin. He'll give it to you. And you put in your game pin, you put in your name, and that's all you need to do. We'll get going with the quiz. And if any of you have any issues, you want to know the source, you want to know the number, you have an explanation that you think is, you'd want to share with us, put that in the chat box. Don't put the answer. Everything else will go. And if you want to you want me to go a little slow or go, I'm going too fast or whatever it is, put it in the chat box. We'll try and help you as much as we can. So with that, I'm now going to share my screen and you are going to see all your names on it. Please do. Yeah, I mean, it's fantastic. It's so nice to just see old names and new names and old friends like Darshan, Padmaja, Udit. Udit, I hope you get to review this book, by the way. It's a fascinating, fascinating book. And I'm like, how did I miss this one? Dipankar, thank you so much for sharing your Sunday evening with us. Vidhi, Dhaval, Gaurav, Nilab Sinha, Arijit, Mukesh, Sri Harshita, Anika, Kishore, Vinod, Sejal, Kartikeya,
Thank you all so much. Dia, Vanshika, thank you for joining us. And now I'm going to very quickly get into the quiz. Don't mean to be very controversial. You know, we try to sort of be as neutral as we can be, but I don't think that's really the route to go every week. So some of our poll questions might seem a little or provocative. So bear with us. But there's a method to all this madness. So here we have it, this week's Game of Facts, and we're going to start with the poll questions. We normally have 3 poll questions. And before that, okay, so yes, before that, there's a question by Darshan. He's saying, what do you think the Russia-Ukraine war will be World War III? Okay, that's a very interesting thought. And I think that is something, it's very interesting what is emerging out of all of this. India has abstained to vote at the United Nations. And I think we all have a view on that. So yeah, I mean, we'll come to that. I think we will be discussing that in the poll questions. So let's hold that there for the minute. So who comes to your rescue when you're in need? Who do you think will come to your rescue if you are at that critical moment? Is it your relatives, your immediate neighbors, your school friends, or your religious, spiritual leader? Who do you think typically when you're in need is going to come to your rescue? Okay, so I think we rely a lot on relatives, and then school friends, and just 10 of us said neighbors. So this is what I found a little strange, because for somebody who's sort of, spent most of my life in a city like Bombay, there was always this joke that, if anything goes wrong with you, it's normally your neighbors who will come to your rescue, or if there's anything you want to share, typically your relatives will be the last to know. It's your neighbors that you probably, are closest to you. Probably things have changed a bit over the years, or maybe now, the whole situation is so different that, typically it's our immediate family that are the ones that will come to us in need. Must be something out there. But again, these are just poll questions. We're alluding to something, but we're not sort of going to address the elephant in the room, which I think is in the chat box. The next question, do you think, I'm sorry, I think this got framed a little wrong, but who do you think, or what do you think can hold back Russia's aggression towards Ukraine? Do you think it's the UN, the NATO, or is it just sanctions, or is it just, a bomb for a bomb? Or do you think actually it's the Russian citizens who will possibly, or who could possibly stop Russia's aggression on its neighbor? So, okay, clearly we're relying on the League of Nations and NATO and the allies and sort of associations like that, clusters of countries to help. And then we are saying that, okay, Russian citizens actually, and I think that I thought was sort of very fascinating, because I think over some 17 or 1800s, and that's what the news is telling us, of Russians who actually came out in St. Petersburg to protest against Russia's interference in Ukraine, or violation of Ukraine's democratic rights and sovereignty, came out in protest, and they were detained. So, these are very brave people who are actually taking a stand and saying that they love their country so much that they can't bear to see what the leader of their country is doing
to their country. That is the biggest disservice, and they're not standing up for it. And I think it's a very brave move to even try to do something like that. And then, of course, I think we're sort of very peaceful bunch of people around here this Saturday evening. So we've said a bomb for a bomb. Well, yes, maybe if we have to, but I think the other methods to lessen or stop the aggression of Russian aggression on Ukraine probably will work. Again, we're all going to sit here miles and miles away, so far away, sort of, trying to guess what a situation is. But I'll say, let's do that, because it's them today. What if one day it is us? I think the way things are going and the way world events are happening, there is this great unpredictability in the patterns. So I think these are things we really need to think about. And hopefully we never have to sort of come across these situations in life. All right, so word cloud, and especially with all that's happening in the world and the kind of disinformation and misinformation is there, wanted to know, what is your trusted source for the news? Is it, whether it's a news platform or a social media platform? If you can put that in there, I'm terribly confused. Sometimes I actually feel that, people reporting maybe on Twitter, it could be somebody who's in Ukraine, what they are writing in their personal accounts are probably more credible than even what one gets to see on television. You'll have this screeching breaking news, and then you'll realize it's actually some video game or some simulation or some old event which has been rehashed and put out as breaking news of what's happening right now, until somebody comes and says, no, this is wrong. Okay, so the New York Times, not Republic, get it? NDTV, Twitter, People's Testimonials. Yes, I think that's sort of very important. Google, Instagram, yes, Al Jazeera, print news platforms, YouTube. No, don't say who cares, because I think this thing about, who cares is really what has led us to where we are. Print seems to be leading the day. Clearly, BBC is still trusted as a news source. Conventional media, we've said Instagram, Indian Express, combination of sources. Yes, I think we all have to sort of figure that out. You search it yourself, okay. Subscribed media, I think, whoever put that in, that's a very interesting way of looking at it, because when you pay for media, you get quality journalism, right? So thank you all so much for this. This is extremely helpful. And it's also very insightful to know that clearly print is still, alive and kicking, at least, if not anywhere else in the IFQ world. All right, so this is the last poll question. And now I'm going to get into the quiz. And once I'm in, I'm going to lock the quiz now so nobody else can join in. And once I get in, I have a little surprise that I want to tell you about. And what I've done this time is I have taken away the questions where you have to stack the right answers, the ranking ones, try to make it a little easy. And I have flipped the quiz. So the easiest questions, the true or false, are right at the end. And you have the multiple choice questions on top. So which means that as you come to the end of the quiz, instead of it getting more difficult, it gets easier. I know it's some crazy stuff we're trying to do. So I hope you enjoy this. It's very free flowing. And some of the questions are sort of connected to the others. So maintain the sequence and please don't go anywhere, because Meenal's quiz comes up immediately after mine. She's got a better book, she's got better questions, and that's something you're going to really enjoy. All right. So the first question coming up: 2 defense industrial corridors have been announced by our government.
One is in Uttar Pradesh, and the second one is in the state of Gujarat, Odisha, Maharashtra, or Tamil Nadu. What's your pick? Okay, so clearly all of you all are very aware of what's happening. It is in fact in the state of Tamil Nadu. So you have one in Uttar Pradesh and one in Tamil Nadu. All right, so here's a look at the scoreboard. Look at it if your name is on it. Stare at it, take a mental picture of it, because you know things change very rapidly on this scoreboard. Okay, the next question. And you get double points for this one. Defense exports have increased by X% since 2016-17. Is it 100%, 60%, 600%, or 16%? Okay, so the number that clearly made even me very uncomfortable, 600%, that's massive, but clearly the whole Make in India effort, FDI, etc., has resulted, and of course, a lot of ease from the government's part in ensuring, the access for exports through a single window mechanism, etc., has really resulted in some tectonic shift. And since 2016-17, we're actually seeing a 600% increase in defense exports. Okay, quickly on the scoreboard. See, there you go. There's a whole complete change. And we move to the next question. Again, double points for this one. In the last 5 years, India has provided financial assistance to the countries of Afghanistan, Bhutan, and we have Myanmar and Nepal, to the tune of, this is line of credit, $0, 500 million US, 5 billion US, or 1 billion US. So zero seemed like an outrageous number, because at the end of the day, all the countries that are mentioned are our neighbors. And we, just going with what's happening, right now in the world with Russia, Ukraine, etc., neighboring countries, breakaway factions, all of that stuff, looks like having a good neighborhood, having good relationships with your neighbors seems to be extremely critical for peace. Yet, having said that, in the last 5 years, these 4 countries have not received a single rupee, US dollars, whatever denomination currency you want to use, from India as line of credit. So there has been no financial assistance whatsoever. Bangladesh did get 500 million in 2017. And then, of course, Sri Lanka has been steadily receiving financial assistance and line of credit from India. But these 4 countries, Afghanistan, Bhutan, Myanmar, and Nepal, have not received a single US dollars as line of credit from India. All right. A bit of a change on the scoreboard. Dhruhi, Madan, Aman, Isha, and Tom, and we'll go into the next question. India's total development investment portfolio in Sri Lanka is 500 million US dollars, 1 billion US dollars, 4 billion, or 2 billion US dollars.
Okay, so it is in fact our exposure in terms of our investment portfolio in Sri Lanka is 4 billion US dollars. And this is one particular specific country where we are actually very involved in whether it is affordable housing or grants for building public health. In particular, India is extremely concerned and looking at the interests or concerned about the interest of the Lankan Tamils. And this is something that we have been sort of very focused on. So clearly a fairly decent sized development portfolio as far as India is concerned. Just one question on that was in the chat box saying, but we do provide stuff. We gave wheat to Afghanistan, whatever. This is financial assistance. We're talking about, real proper line of credit to countries. And therefore it kind of, it's not sort of in kind. We're talking clearly in terms of currency cash kind of investments. And these are extremely critical for countries. In fact, this number was, and these details was specifically submitted in the parliament very recently. So yeah, there's a whole paper on that one. Okay, so we've had the three names on the list drop off and new ones come on, and let's see how long you're able to sort of retain your position. Okay, so on to the next question. Percentage of households in India consuming iodized salt. Is it 34%, 74%, 94%, or 54%? We've taken a full switch and now we're back at salt. So according to the National Family Health Survey, 2019 to 2021, 94% of India's households now use iodized salt. And this is extremely important, especially for those suffering from thyroid problems or preventing goiter and thyroid issues. Using iodized salt is extremely critical, and it's been a lot of effort in terms of educating and getting people to understand the importance of and the difference between common salt and iodized salt, and then getting them to adapt to that. All right. The scoreboard, Druhi, Paras, Madan, Isha, and Sukla, and we'll go into the next question. Double points for this one. As on 8th February 2022, this percentage of India's population received the first dose of the COVID-19 vaccine. Is it 54% of the entire population of India above the age of 15, 74%, 64%, or 94%? We're talking about the population above the age of 15 that have received the first dose of the COVID-19 vaccine. Okay, so that's fantastic. A lot of you clearly know a lot about this. It is 94% of the population that have actually got access to the vaccine. And this is quite phenomenal because we're talking about 95.09 crore people that have got their first dose. The next question, and it's actually churned up a whole new scoreboard. The next question coming up, the percentage of India's fully vaccinated population, that is 2 doses. Where do we stand on that one? Is it 73%, 63%, 83%, or 93%? Clearly, in the first dose, we've covered quite a number of our population. We're talking about fully vaccinated population.
So 73%, to be precise, it's 72.6%, so it's approximate 73% of the population are fully vaccinated. Now, I'm just going to leave this out there. So you have 94% of the population that have got one dose, 73% have got second dose. So there is a gap there, which clearly needs to be covered. And then the whole lot to still cover because you have the booster shots and whatnot. But clearly this is something that I think will probably become a regular feature in our lives, may drop off the IFQ questions, but we will be taking booster shots fairly on a fairly regular basis. All right, the scoreboard. Again, now Udit is in the lead. What is going on here? All right, Udit's like, okay, this book I have to review. Shreyan, Vinod, Divyanshi, and Aman. The shelf life of Covishield vaccine is X months from the date of manufacture. Is it 3 months, 9 months, 12 months, or 6 months? It's been so much written about in the press, it's not funny. Just about the efficacy of the vaccine, the shelf life, etc. These things are all, of course, determined by the regulator. But of course, important information that we as public also need to know. So the Central Drug Standard Control Organization is the regulator that determines the shelf life of drugs. And as far as Covishield is concerned, they have said it is 9 months from the date of manufacture. This number is very important because if you are going for your Covishield vaccine or somebody you know is going, then this is information that clearly is very useful to them. We'll take a look at the scoreboard, and it's Divyanshi, Udit, Shreyan, Vinod, and Aman now. And the next question coming up, the shelf life of Covaxin is X months from the date of manufacture. So clearly not the same as Covishield, I think, or maybe, but that was Covishield. Now we're asking you about Covaxin, another very controversial vaccine. Is it 9 months, 3 months, 12 months, or 6 months? Okay, so clearly you know a lot about this one, but the same regulator that has given Covishield a 9-month shelf life has given Covaxin a 12-month shelf life. So yes, that's all we need to know at this point in time. We'll take a look at the scoreboard. It's Divyanshi, Shreyan, Aman, Udit, and Niharika. Very quickly go to the true or false coming up. Double points for this one. 2021 accounted for the highest number of dengue deaths over a 5-year period. Is this statement true or false? Okay, you are correct. 36 of you said true, and this is right. So you say dengue, I say dengue. It's all the same. But in 2017, and clearly there is underreporting when we talk about deaths by dengue, it was 325. And then it started to go down. In fact, in 2020, there were only 66 deaths reported due to dengue. Of course, a lot more cases. But in 2021, it was very surprising because we saw numbers which were from the 2017, 2018 vintage back in 2021. Clearly, because I think the symptoms were misunderstood, we were not really going to the doctor to talk about our symptoms or misdiagnosis, or, we just didn't want to sort of address it. UP saw a lot of deaths, which were reported in the press as well. But clearly there was more deaths due to dengue than there ever was in a 5-year period.
So it's Shreyan, Divyanshi, Vinod, Niharika, and Isha. And now we're coming to malaria, and double points for this one. Over the last 5 years, cases of malaria have more than doubled. Is this statement true or false? Okay, you're correct. 35 of you actually got this right. This is one probably success story that we're looking at, and there is going to be a vaccine coming out for malaria as well. So this is one of those stories that make you happy, but from a caseload which was something that we thought was going to be completely out of our control, we've actually got that down into 3 digits, but it's in the hundreds now than what it was initially. All right. I'm talking about the deaths due to malaria in terms of cases as well. It has come, I think, less than half. I'm sure Rupesh is going to put those numbers out so you can see it. The last true or false: sale of non-iodized common salt for human consumption is actually in violation. So it's illegal to sell non-iodized common salt in India. Is this statement true or false? Or can people actually, I don't know, choose to still have common salt? So according to the FSSAI, which is the Food and Standards Association of India, you are in violation. You are not allowed to sell common salt for human consumption. This is clearly classified as a violation, and you can only sell iodized salt in India. So this was the last question that I had. I think there is one issue that's come up on one of the questions. I'll address that. But in the meantime, I'm going to very quickly show you who the winners of this quiz are. And then immediately I will turn off my camera so that Meenal can blow your minds with the Hindi quiz questions. All right. So here we have it on the podium. In the 3rd spot, we have Niharika. You're going to receive Gods and Ends. It's a lovely, lovely book, Niharika and Isha. And in the number 1 spot, it is, in fact, Vinod, who gets to actually read this wonderful book. Would love to hear your views about this. And I'm now going to stop share. Thank you for joining me. And of course, I'm going to see you all next week again. हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सबका बहुत स्वागत है हिंदी क्विज में। अभी अभी आपने इंग्लिश क्विज खेला एंड आई थिंक द क्विज वाज अमेजिंग, द क्वेश्चंस वर अमेजिंग। और क्या अब आप रेडी हैं एक और राउंड क्विजिंग का करने के लिए? और बाय द एंड ऑफ इट आई एम श्योर 3 of you are going to win an amazing book जो आपको बहुत पसंद आएगी। आज की जो किताब है वो लिखी गई है प्रेमचंद जी द्वारा और इसका नाम है वरदान। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से जल्दी कहूट पर गेम पिन एंटर कर दीजिए ताकि आप गेम एंटर कर सकते हैं। गेम पिन आपको चैट बॉक्स में दिया गया है 7750 और कुछ ही देर में मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, तो आप अपने आप को अपने यू वुड बी एबल टू सी योर नेम्स मेरी स्क्रीन पर। और जल्दी से मैं क्वेश्चंस स्टार्ट करूंगी। रितिश, आप कह रहे हैं कि यू मिस्ड पोडियम बाय 84 पॉइंट्स। वाओ, दैट रियली हर्ट्स। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बट नो इश्यूज, यू हैव अनदर क्विज हियर। आई होप आप यू गिव योर बेस्ट और आप बहुत अच्छे से खेलें और आपको सारे सही उत्तर आए, तो दैट 84 पॉइंट्स इज ऑल्सो, आई मीन, यू डोंट मिस इट, यू आर देयर इन द टॉप 3। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और रूल्स जैसा कि आप जानते हैं बिल्कुल सिंपल है। अभी अभी आपने इंग्लिश क्विज खेला है, सही सेम उसी तरीके से
आपको हिंदी क्विज भी खेलना होगा, बस जो क्वेश्चंस हैं और ऑप्शंस हैं वो हिंदी में दिए गए होंगे। अगर आपको हिंदी समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, देन आई विल ऑलवेज एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश एज वेल, तो आप प्लीज घबराइएगा नहीं। थोड़ा सा आई थिंक टाइम की वजह से आपको हो सकता है कि इशू आए, बट अदरवाइज आई थिंक इट विल बी ऑल ग्रेट। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, और तब तक मैं आपको किताब के बारे में बता देती हूँ कि आज की किताब कौन सी है। जैसे कि मैंने कहा, वरदान। इस किताब में ये एक कहानी है दो नेबर्स की, जो कि दो पड़ोसियों की, जिनका नाम है प्रताप चंद्र और बिरजन। तो जो प्रताप चंद्र है वो एक गॉडेस के वरदान से, यानी कि एक देवी के वरदान से, ब्लेसिंग से पैदा हुए थे। जो उनकी माता थी, उन्होंने बहुत तपस्या करी, प्रेयर्स करी थी, और फिर वो एक देवी के वरदान से पैदा हुए थे। और जिस घर में वो रहते थे, उसी घर में उनके एक किराएदार के तौर पर एक फैमिली आई, जिसमें एक लड़की थी, उसका नाम था बिरजन। और जैसे कि ये एक साथ साथ रहते थे, तो इनके इनके बीच ये क्लोज आए और इनके बीच प्रेम हुआ। और उसके बाद लेकिन जो बिरजन है, उनकी शादी किसी और से हो जाती है। तो यही किताब है, यही कहानी है कि उसके बाद प्रताप चंद्र उनके साथ शादी दोबारा करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके जो पति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो एक आदर्श बेटा बनते हैं, वो जो उनकी माँ चाहती हैं वो करते हैं। तो ये जो आज के तीन हमारे विजेता होंगे, उन्हें ये किताब मिलेगी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, और आप जल्दी से जल्दी गेम में एंटर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पहले के 2-3 क्वेश्चंस पोल क्वेश्चंस होंगे, और उनके कोई अंक नहीं है, कोई सही गलत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पोल क्वेश्चंस के साथ। ये हिंदी गेम ऑफ फैक्ट्स का वीक 2 है, और आज का हमारा फर्स्ट पोल क्वेश्चन ये है। एक वर्ड क्लाउड है, आपकी किताब का शीर्षक क्या होगा? आपके हिसाब से अगर आप कोई किताब लिखेंगे तो आप उसका टाइटल क्या देना चाहेंगे? What would be the title of your book? Can be an autobiography, और कोई भी किताब जो आप लिखना चाहें किसी भी विषय पर, तो उसका टाइटल क्या होगा? इम्पॉसिबल। ओके, आई एम श्योर यहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग टाइटल्स हैं। अ लिटिल लाइफ, आई एम नॉट नॉर्मल, पछतावा, ओके, एनिमल लिबरेशन, माई हीरो, माई नेम, ओके, आदर्श, थॉट्स, no one important, Rocky, always fighting, experiences, Avengers, Atmavishwas, Post-it, misunderstood, wow, I think misunderstood हम सब कहीं ना कहीं होते हैं। गुप्ता जी, आइडिया, मेरी कहानी, गुमान, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अपने बुक के टाइटल्स हमारे साथ। चलते हैं हमारे अगले पोल क्वेश्चन की तरफ। स्वास्थ्य के मामले में आप सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देते हैं? इनमें से किस ऑप्शन पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं? क्या आप कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या आप डाइट पे बहुत ध्यान देते हैं, आहार, या आप दोनों एक्सरसाइज और डाइट को ध्यान में रखते हैं, या आप आलसी हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते, या आपको थोड़ा आलस ज्यादा आता है? ओके, 15 ऑफ यू, आपने कहा है कि आप आलसी हैं, और बहुत ऑनेस्ट भी हैं, क्योंकि आप हमें बता रहे हैं कि आप आलसी हैं। 13 लोगों ने कहा है कि वो एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। 13 लोगों ने, सो देयर इज अ बैलेंस। कुछ 13 है जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं और जो एक्सरसाइज करते हैं, और 13 है जो बोथ एक्सरसाइज एंड फूड की तरफ ध्यान देते हैं, हेल्दी डाइट की तरफ ध्यान देते हैं। आप में से 12 लोग हैं जो प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट की तरफ ध्यान देते हैं। ओके, चलते हैं आज के तो अब इसके बाद हमारा क्विज स्टार्ट हो जाएगा। और
मैं थोड़ी देर में क्विज को लॉक कर दूंगी, तो आप एंटर नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगर कोई भी अभी भी ज्वाइन करना चाहता है, प्लीज जल्दी से जल्दी क्विज को ज्वाइन कर लीजिए। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, फॉर डबल पॉइंट्स। केवल 15 देश महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी कार्य का अधिकार यानी लीगल वर्क राइट्स देते हैं। Only 15 countries give women equal legal work rights as men. क्या ये सही है या गलत? $25 of you आपने इसका सही उत्तर दिया है। ये गलत है क्योंकि 15 कंट्रीज नहीं है, ऐसी ऐसी सिर्फ केवल 6 कंट्रीज हैं। आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज दैट आर देयर इन द वर्ल्ड, जस्ट 6 कंट्रीज जो हैं वो विमेन को इक्वल लीगल वर्क राइट्स देती हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स रिसेंट जो उनकी रिपोर्ट आई है, विमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट। उसमें उन्होंने ये देखा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाज मेजर्ड इन 187 कंट्रीज। सिर्फ जो ये 6 कंट्रीज थी, ये हर जो भी इंडिकेटर्स थे, जो भी मेजर इंडिकेटर्स थे, उनमें फुल स्कोर्स इनको मिले हैं। और ये 6 कंट्रीज जो हैं वो है बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन, लैटविया और लक्समबर्ग। और ये सिर्फ 6 कंट्रीज हैं आउट ऑफ द होल ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पर इक्वल लीगल वर्क राइट्स देते हैं विमेन को। इसकी वजह से अगर वही हम एक टिपिकल इकोनॉमी के बारे में बात करें तो सिर्फ 1/3 राइट्स ऑफ मेन है इन जो भी मेजर एरियाज हैं, उसमें से सिर्फ 1/3 एरियाज में विमेन को इक्वल राइट्स मिलते हैं एज मेन, सो विच इज वेरी लेस। और आई मीन द फैक्ट कि सिर्फ 6 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में जो इक्वल वर्क लीगल वर्क राइट्स देती हैं, आई थिंक दैट सेज अ लॉट। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा स्कोरबोर्ड आपके सामने है। वी हैव सुमेधा, दिया, पद्मजा, नवनीत एंड सेजल। देखते हैं हमारे एंड बाय द एंड ऑफ द क्विज कि कौन स्कोरबोर्ड पे रहता है, कौन हमारे पोडियम पे आता है और आज की किताब जीत कर जाता है या जाती है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फॉर डबल पॉइंट्स। मुझे डबल पॉइंट्स बहुत पसंद है। विश्व स्तर पर लड़कों को जन्म के समय जीवित रहने यानी कि सर्वाइवल रेट्स एट बर्थ की दर अधिक होती है। क्या ये सही है या गलत? ग्लोबली बॉयज हैव हायर सर्वाइवल रेट्स एट बर्थ इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। सर्वाइवल रेट्स एट बर्थ की बात करें और हम कह रहे हैं कि बॉयज, ओके, सो 34 ऑफ यू आपने सही उत्तर दिया है। ये गलत है क्योंकि ग्लोबली ये पाया गया है कि गर्ल्स हैव हायर सर्वाइवल रेट्स एट बर्थ और दे आर ऑल्सो मोर लाइकली टू बी डेवलपमेंटली ऑन ट्रैक। जो उनकी डेवलपमेंट होती है वो ऑन ट्रैक रहती है और दे आर एज लाइकली एज बॉयज टू पार्टिसिपेट इन प्री स्कूल। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसपे कहीं पे गर्ल्स आगे हैं और कहीं पे इक्वल लेवल पर हैं। लेकिन वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, ये ग्लोबली डेटा है, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द ओनली लार्ज कंट्री जहां पर जो बहुत सारी गर्ल्स हैं, मोर देन गर्ल्स दे डाई एट बर्थ देन बॉयज। एंड ऑफ कोर्स गर्ल्स का जो ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल रेट है दैट इज ऑल्सो मोर देन बॉयज। तो इस क्वेश्चन के बाद स्कोरबोर्ड, ओके, वी हैव परीक्षा, आई थिंक टोटली चेंज हो चुका है। अब परीक्षा स्कोरबोर्ड के टॉप पर है, उनके बाद है विनोद, पद्मजा, तुषार और नवनीत। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। आई थिंक जब स्कोरबोर्ड ऐसे चेंज होता है इट्स वेरी एक्साइटिंग, आपको भी अच्छा लगता है अपना नाम देखने में। बट जो भी अभी तक हमारे स्कोरबोर्ड पे नहीं आ पाए हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि आप नहीं आ सकते, बिकॉज आपने देखा है कि कैसे लास्ट क्वेश्चन तक आते आते सब चेंज हो जाता है। पिछले क्विज में ही आपने देखा कि जैसे ट्रू एंड फॉल्स लास्ट में थे तो आप यू कुड गिव द आंसर इजिली। तो प्लीज निराश मत होइएगा अगर आप स्कोरबोर्ड पे अभी नहीं है, यू माइट विन द क्विज। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, विश्व स्तर पर 4 में से लगभग एक लड़की जिसकी एज 15 to 19 ईयर्स के बीच में है, ना तो नौकरी करती है और ना ही शिक्षा प्राप्त करती है। क्या ये सही है या गलत? Globally, nearly 1 in 4 girls between the ages of 15 and 19 are neither employed nor in education or training. आपके हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है या गलत?
Okay, 33 of you, आपने बिल्कुल करेक्टली आंसर किया है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. और यही अगर हम बॉयज के साथ कंपेयर करें, जहां 4 में से एक लड़की कोई नौकरी नहीं करी या शिक्षा प्राप्त नहीं करी, वहीं लड़कों की अगर हम बात करें तो 10 में से एक लड़का जो है वो या तो नौकरी नहीं कर रहा है या शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है. तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज गैप देयर. और इसी अगर जेंडर गैप की बात करें, जैसे कि हम जानते हैं विमेंस डे इज आल्सो अराउंड द, इट्स जस्ट गोना कम इन अ वीक, इन अ फ्यू डेज, 10 days. तो हम जेंडर गैप के ऊपर एक पॉडकास्ट भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी डिटेल्स आपको बहुत ही जल्द मिलेंगी. हमारे नेक्स्ट क्विज में हम आपको और बताएंगे इस पॉडकास्ट के बारे में, बट प्लीज स्टे ट्यून्ड. दिस इज अ पॉडकास्ट आई थिंक विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड जेंडर गैप, role of women, where do women stand, and this will all be with respect to data. तो ऐसा नहीं है कि इसमें बस ओपिनियंस होंगे, बिल्कुल भी नहीं. इसमें डेटा होगा, ऑथेंटिक डेटा होगा, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है. और इसके बारे में हम और डिटेल्स आपको नेक्स्ट गेम ऑफ फैक्ट्स में देंगे, हमारे सोशल मीडिया पर देंगे. सो प्लीज स्टे कनेक्टेड. ओके, सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये जो गैप है, ये जो ऐसा क्यों है कि सिर्फ मतलब हर 4 में से एक लड़की जो है या तो वो नौकरी नहीं कर रही या वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर रही है. इट इज बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, जैसा कि हमने बात भी करी है कि सेफ्टी है जो सबसे बड़ा रीजन होता है गर्ल्स के लिए. जब उन्हें कहीं काम करना होता है या उनकी शिफ्ट लेट नाइट होती है, तो उनके पेरेंट्स या अगर उनके पेरेंट्स जो हैं वो ये बोलते हैं कि क्या आपके लिए सेफ है वहां काम करना, रात को कितने बजे तक वापस आओगे, अकेले आना, अकेले जाना. सो ऑल दैट सेफ्टी इज अ ह्यूज, it has a huge role to play in a woman's life. वहीं हाइजीन और सैनिटेशन फैसिलिटीज काफी जगह पे निगलेक्ट की जाती हैं, जिसकी वजह से काफी जो छोटी बच्चियां हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं या अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं करती. अगर हम डिस्क्रिमिनेटरी टीचिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं. इनफैक्ट काफी ज्यादा स्टडी मटेरियल भी कभी कभार ऐसा होता है जो जेंडर गैप को और बढ़ावा देता है. तो दैट अगेन हैम्पर्स द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड. तो इस क्वेश्चन के बाद सॉरी, हमारा स्कोरबोर्ड, नाइस शिफ्ट अगेन. वी हैव विनोद, आई थिंक वो सेकंड पोजीशन पे थे, अब वो फर्स्ट पोजीशन पर हैं. उनके बाद है पद्मजा, नवनीत, हनुमान, ओके, आर्यन. और इस क्वेश्चन के साथ अमृता बी इज द हाईएस्ट क्लाइंबर. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फॉर डबल पॉइंट्स. विश्व स्तर पर 15 से 19 वर्ष की आयु की कितनी लड़कियां फोर्स्ड सेक्स की विक्टिम बनी हैं? ग्लोबली, नंबर ऑफ गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 15 and 19 years who have experienced forced sex. और आपके ऑप्शंस है 13 million, 1 million, 6 million या 20 million. आपके हिसाब से क्या वो नंबर होगा जो जिन लड़कियों ने फोर्स्ड सेक्स एक्सपीरियंस किया है? एंड दिस इज ग्लोबल डेटा, सो कीप इन माइंड कि हम ग्लोबली बात कर रहे हैं. ओके, 14 ऑफ यू, आपने सही उत्तर दिया है. आप में से 13 मिलियन जो है वो करेक्ट आंसर है. 13 मिलियन. टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, इट इज 1 in 20 गर्ल्स जो 15 to 19 years की एज की हैं. They have experienced forced sex. अगर हम ड्यूरिंग टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, they face the highest risk of gender based violence. वहीं मिलियंस ऑफ गर्ल्स, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो who are subjected to child marriage या फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस या फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, यानी कि जब बच्चे को, जब गर्ल चाइल्ड को छोटे उनके जब वो वूम में होती हैं तभी ही उन्हें मार दिया जाता है. So these, even though these have been recognized as human rights violation, these practices are still, they still happen at many places in the country and outside, of course, in the entire world. So with this, we move on to the scoreboard again, and we have, wow, okay, we have Anuj on top of the scoreboard now, and then we have Tushar. उनके बाद है परीक्षा, विनोद और पद्मजा. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ.
अगेन फॉर डबल पॉइंट्स, आई थिंक बहुत स्कोरबोर्ड शिफ्ट हिलता रहेगा. कार दुर्घटनाओं में महिलाओं को गंभीर चोट लगने की संभावना अधिक है. क्या ये सही है या गलत? Women are more likely to suffer severe injuries in car crashes in comparison to men. 35 of you आपने सही उत्तर दिया है. You might ask कि ऐसा क्यों, मतलब कार में जेंडर गैप कहाँ से है? But women are actually 47% more likely to suffer severe injuries. मतलब कि 47% ज्यादा चांसेस हैं उनके सिवियर इंजरीज को एक्सपीरियंस करने का एक कार एक्सीडेंट में. ये मेजरली इसलिए है क्योंकि जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं कार के वो प्राइमरीली वो पुरुषों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं. प्राइमरीली दे हैव बीन फीचर्ड, द फीचर्स आर हैव बीन डिजाइन्ड कीपिंग मेन इन माइंड. जैसे कि जो पोजिशनिंग ऑफ हेड रिस्ट्रेंट्स है, इफ यू कंसिडर अ वुमेन्स हाइट, एन एवरेज वुमेन्स हाइट, उसके हिसाब से काफी सारी चीजें पर्सपेक्टिव में आती हैं. वहीं डिफरेंट नेक स्ट्रेंथ और मस्कुलेचर एज वेल एज द प्रेफर्ड सीटिंग पोजीशन. तो इन कुछ चीजों की वजह से जब एक कार क्रैश होता है, दे मेक women more susceptible to severe injuries. तो इस क्वेश्चन के बाद हमारा स्कोरबोर्ड वेरी स्लाइड शिफ्ट. अनुज, तुषार, परीक्षा, पद्मजा एंड नवनीत. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, क्योंकि आई नो कि आप में से कुछ लोग हैं जो जल्दी से किताब जीतना चाहते हैं. विश्व स्तर पर प्रतिदिन बाल वधु यानी कि चाइल्ड ब्राइड्स बनने वाली लड़कियों की संख्या क्या है? 1100, 33,000, 22,000, 11,000. Globally, number of girls who become child brides every day. आपको बताना है, is it 1,100, 22,000, 33,000 or 11,000? Okay, 20 of you आपने correct answer दिया है. The actual number is 33,000. Again, to put it in perspective for you, total जो एक 12 million girls get married before the age of 18 years, और which is roughly 33,000 every day. ठीक है. और वहीं उसको और अगर हम उसमें छोटे नंबर में लेके आए तो which is 1 in every 2 seconds. मतलब हर एक चाइल्ड ब्राइड बनती है हर 2 सेकंड में. तो आई थिंक ये एक बहुत ह्यूज नंबर है. मतलब हर 2 सेकंड में एक ऐसी लड़की है जिसका बाल विवाह हो जाता है. रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं. कुछ कम्युनिटी बेस्ड रीजंस होते हैं. कुछ काफी कम्युनिटीज में चाइल्ड मैरिज इज ओके और वही सही रास्ता है, तो दैट कुड बी वन रीजन. और काफी जगहों पे काफी फैमिलीज में गर्ल्स को एक इकोनॉमिक बर्डन भी माना जाता है. तो it's kind of to pass that burden, that financial burden to another family, they are married off early as children. Sorry. इस क्वेश्चन के बाद टोटली हमारा स्कोरबोर्ड बहुत एक्साइटिंग हो गया है. वी हैव अनुज, हनुमान, मदन, तुषार एंड सेजल, और दिव्यांशी इज द हाईएस्ट क्लाइंबर विद दिस क्वेश्चन. चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. लंबे समय तक वायु प्रदूषण के जोखिम के कारण कोविड-19 से होने वाली मौतों का प्रतिशत क्या है? अभी हम जेंडर के बारे में बात कर रहे थे, अब हम एनवायरनमेंट पे आ गए हैं. Percentage of deaths from COVID-19 that are attributed to long-term air pollution exposure. Is it 63%, 33%, 53%, or 43%? Twelve of you आपने correct answer दिया है. 20 of you went with the highest number. Okay, but you know we don't keep our tricks the same every time. So correct answer जो है वो है 33%, और 33% जो deaths हैं that could have been prevented अगर ये जो long term air pollution, I mean this is something which is obviously easier said than done, but
जो लॉन्ग टर्म एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से ऑलमोस्ट 33% डेथ्स जो है वो होने से बच सकती थी। और इस क्वेश्चन के बाद स्कोरबोर्ड सेम नेम्स, थोड़ा सा स्लाइट चेंज, सो वील जस्ट क्विकली मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या ये सही है या गलत? India has signed the Glasgow Leaders Declaration on Forest and Land. Thirty of you actually went with Sahi. ये गलत है. India, along with a few other nations, we haven't signed on this declaration. More than 130 countries, including India's neighbors, जो हैं, उन्होंने sign किया है. लेकिन India, along with South Africa, Saudi Arabia, हमने ये declaration पर sign नहीं किया है. Moving on to our next question, and the scoreboard is again उन्हीं names में slight change. Anuj, Tushar, Madan, Sejal, and Hanuman. We have 2 more questions left. I think इनमें से एक double points question भी होगा. So let's see who wins the book today. भारत से कार्बन एमिशन वैश्विक सूची यानी कि ग्लोबल लिस्ट में किस रैंक पर आती हैं? पहले, चौथे, तीसरे या दूसरे? Carbon emissions from India rank dash in the global list. Is it first, second, third, or fourth? I think ये थोड़ा easy तो होगा आपके लिए. So I'm hoping कि most of you answer correctly this question. 3 more seconds to go, and then we'll have the results for this question. Okay, yeah, majority got this correct. तीसरे स्थान पर हैं, and I'm sure आपको पता होगा कि first और second पे भी कौन है. So we are third after China and US, and we account for about 2.46 billion metric tons of carbon, or 6.8% of the total global emissions. जो total global emissions है, उसका 6.8% carbon emissions का हमारा देश produce करता है, and we rank third after China and US. So with this, we have our last question coming up, and this is going to be a puzzle question. और आपको पिछले क्विज में अभी आपने कोई puzzle question नहीं देखा, but इसमें आपको रैंक करना होगा एक ऑर्डर में, तो प्लीज करेक्टली ऑर्डर कीजिएगा. टेक योर टाइम, बट इसे करेक्टली कीजिएगा, बिकॉज हो सकता है यू माइट विन डबल पॉइंट्स फॉर दिस. इन देशों को उनके एयर क्वालिटी के आधार पर उच्च से निम्न में रैंक करें. रैंक दीज कंट्रीज फ्रॉम हाई टू लो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एयर क्वालिटी. आई थिंक ये भी इजी होना चाहिए. सो योर ऑप्शंस आर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान. आपको इन्हें एयर क्वालिटी के आधार पर रैंक करना है. जिस कंट्री की एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब है वो सबसे ऊपर आएगा. सो ऑन एंड सो फोर्थ. Still 30 more seconds to go, so आप आराम से आंसर कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि पजल क्वेश्चंस दे मेक यू थिंक अ लिटिल बिट. तो वो टाइम हम आपको इसीलिए देते हैं ताकि आप थोड़ा सोचिए, और फिर एंड के कुछ सेकंड्स में भी अगर आप आंसर दे देंगे तो यू माइट जस्ट गेट दोस डबल पॉइंट्स. Okay, hurry up. Last 5 seconds to go. Okay, 12 of you got this correct, which is not bad at all. और जो करेक्ट ऑर्डर है वो आपके सामने है. बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और फिर अफगानिस्तान. This is according to the air quality index arranged by the annual average PM 2.5 concentration. तो बांग्लादेश का जो score है, that is at 77 microgram per cubic meter. Pakistan is at 59 microgram per cubic meter. इंडिया 51 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और फिर अफगानिस्तान एट 47, और उसके बाद चाइना भी आता है, मतलब उसके बाद ही चाइना आता है एट 34.7 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर. तो 12 ऑफ यू गॉट डबल पॉइंट्स फॉर इट, एंड वी आर रेडी टू सी कि कौन आज के क्विज में
टॉप स्कोरर्स हैं जो आज की किताब जीत कर जाएंगे. तो ऑन द थर्ड पोजीशन टुडे एट आवर पोडियम वी हैव सेजल. सेकंड पोजीशन पर है मदन. और आज के क्विज के विनर हैं स्पॉटलाइट अनुज. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. हमारे रनर्स अप हैं हनुमान एंड तुषार. इट वाज ग्रेट सीइंग यू टुडे एंड आई होप कि आपने भी क्विज एंजॉय किया होगा. और प्लीज हमें नेक्स्ट वीक दोबारा से ज्वाइन कीजिए. अगेन वील बी हियर विद एन इंग्लिश एंड अ हिंदी क्विज. और जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं जो हम आपके लिए होस्ट करेंगे. तो ऐसा ही एक इवेंट है विच इज गोइंग टू हैपन ऑन 12th ऑफ मार्च. और एक ऑथर हैं जो who will come on board, जिसकी डिटेल्स अगेन हम आपको नेक्स्ट क्विज में देंगे और हमारे सोशल मीडिया पर देंगे. सो प्लीज स्टे कनेक्टेड. और आप अपनी बुक्स क्लेम कर सकते हैं एट द गूगल लिंक विच इज गिवन टू यू इन द चैट बॉक्स. प्लीज claim your books within 24 hours, क्योंकि कुछ भी जो भी claims उसके बाद हमारे पास आते हैं we will not accept those. So thank you so much and have a lovely weekend ahead and take care.